Hello, beta. Good afternoon, everyone. I hope that I am audible to all of you. We will go ahead and start the second class of Environmental Economics today. In the first class, we had already gone ahead and learned the following. क्या बात की थी बेटा हमने? We had gone ahead and talked about what is environment. We had studied what is environment. We had talked about what is environmental economics. इसी environmental economics को we had contrast with ecological economics, right beta? So we had tried to go ahead and we had tried to study environmental economics and उसी को हमने ecological economics से भी compare किया था. Okay. Now, we had also gone ahead and we had talked about environmental policies. हमने ये भी बात की थी why environment is a composite good in the last class. And while talking about why environment is composite good, जब हमने इसके बारे में बात की थी कि environment एक composite good क्यों है, तब हमने उसके functions भी पढ़ लिए थे, that it provides us aesthetic, it provides us raw material also for consumption and production. इन सब बारे में हमने बात की थी. Today, I want to focus my entire analysis on two main concepts. First of all, I want to go ahead and I want to do the Ayres, it's also known as Ayres Kneese model. एक इस चीज पे हम थोड़ा focus करेंगे. Different people pronunciate it differently, and एक we will be focusing another thing that I will be focusing on. It is going to be on the law of thermodynamics. Although law of thermodynamics is a science concept, but we will try to go ahead and see how that law can be used in the field of economics. तो इसका हम थोड़ा सा introduction लेंगे from the point of view of economics. That will be the focus of today's lecture. Okay, beta, let us go ahead and let us try to understand this thing. तो सबसे पहले हम एक circular flow की बात करते हैं. We will begin the session by understanding what is Ayres Kneese material balance model. Whenever you study any model, आपको ये जानना बहुत ही जरूरी है. It is very important that you understand कि वो कौन से साल में आया था, which is the year in which it came, right? So this model came in 1969. ठीक है बेटा, इस मॉडल में हमने पूरे के पूरे इकोनॉमी को डिवाइड किया in four main parts. The entire we can go ahead and say the entire service of the environment can be divided in four main parts. So E1, E2, E3, and one main E4. This is how we divide the service of the environment. इसको समझने के लिए I will just go this. So हम text बाद में पढ़ेंगे. First, let us try to understand this diagram first. तो देखो here what is happening now. Here you have, I have only taken two sectors of production. That means producer and consumer. तो you remember when we used to do the circular flow of income, जब भी हम circular flow of income करते थे, हम हमेशा ऐसे बात करते थे कि y is equal to c plus I, and then we would add other sectors. फिर हम गवर्नमेंट का रोल ऐड कर देते थे, फिर हम एक्सटर्नल सेक्टर का रोल ऐड कर देते थे. तो we used to go ahead and add more sectors into the economy, right? But to begin with, we would always start with a two-sector economy. हम हमेशा दो sector economy से ही शुरू करते थे. So this is exactly what I have done. I have started with a two-sector economy. One, I have the producer. The other, I have the consumer. This is something we already know. Now, just a minute, beta. This will make more sense. So now we have one is producer and the other is consumer. Now what is happening now? Producer is giving raw material, goods and service to the consumer. Producer अपने सारे goods और service consumer को provide कर रहा है. And in return, consumer is providing its factor of production to the producer. So consumer is going ahead and working as labor. यही होता है. The producer will go ahead and take labor, use labor to form goods and services, sell these goods and services to the households again. ये हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है, राइट? जब लेबर देते हैं तो उसके अगेंस्ट आपको वेजेस मिल जाती हैं, और जब आप गुड्स एंड सर्विस खरीदते हो तो उसके अगेंस्ट यू पे प्राइस फॉर द गुड. दिस इज व्हाट हैपेंस यूजुअली.
Now, what we are doing is we are taking it one step ahead, and now we are going ahead and saying that, look, in this entire process, whenever production and consumption is taking place, waste will be generated in the economy. है ना? So whenever you produce any good and service, जब भी आप कोई भी तरीके की प्रोडक्शन कर रहे हो, or you are doing any kind of consumption, जैसे for example, बहुत basic example, बेटा, when you travel in a train, you buy a water bottle, plastic water bottle, then you drink water, and उसके बाद you dispose that water bottle like that only. आप ऐसे ही उस प्लास्टिक की बॉटल को बस dispose of कर देते हो. तो that water bottle, that plastic is a waste that you are generating, है ना? तो that waste that you generate, जो आप waste generate करते हो, that is called waste and sink. So through the process of consumption and production, in both the processes, waste is generated, and this waste, this is called as E2. What is this waste called? बेटा इसको क्या बोल देते हैं? E2. Similarly, so this is one role of the environment. ये environment का ही एक role हो गया, that environment is taking waste of consumer एंड प्रोड्यूसर. इन्वायरमेंट आपके वेस्ट को लेके उसको सिंक इन कर रहा है. इट इज टेकिंग योर वेस्ट एंड इट इज प्रोड्यूसिंग, इट इज प्रोसेसिंग दैट वेस्ट, है ना? वो वेस्ट को प्रोसेस कर रहा है. अगर आज जाकर हम ऐसे ही रोड पर कहीं पे एक कुछ फेंक दें, तो धीरे धीरे से आफ्टर रेन कम्स एंड सब कुछ हो जाएगा, वो धीरे धीरे प्रोसेस होकर शायद इट विल जस्ट डिसॉल्व with the soil, right? So the environment will go ahead and process the waste. जो भी consumers and producers का waste generation हो रहा है, whatever waste is generated by producer and consumer, environment is going ahead and processing that waste. Environment वो सारे के सारे waste को लेकर process कर रहा है, sink in कर रहा है. So that is one role of the environment, and we can say that and name that as E2 beta. इसको हमने E2 बोल दिया, right? Similarly, try to understand that for production to take place, we need raw material and we need energy. We need raw material and we need energy. What is energy? जैसे for example, solar energy, wind energy, coal, petroleum, all this is coming from the environment, है ना? तो चाहे I have to go ahead and generate electricity for the purpose of production, बेशक ही मुझे electricity क्यों ना generate करनी हो, or whether I have to go ahead and be involved in any kind of production for which I need solar energy, wind energy, कोई भी तरीके का अगर मुझे energy चाहिए environment से, so how will I get that energy? वो energy कहाँ से आएगी? It will come from the environment. So E1 beta, we have called E1. What is E1? E1 is the energy that the environment is providing you, right? The third thing is all the amenities provided by the environment. हाँ, तो all amenities include क्या बेटा? Amenities में what all will come? Amenities provided by the environment. So in amenities, you will have all amenities, whether it is mountain, whether it is river, whether it is trees, providing you oxygen, taking your carbon dioxide, all aesthetic, जो भी beautiful beauty आसपास का environment provide कर रहा है आपको, all those amenities are provided by the environment. And these three together, we call them as falling under E4. ठीक है? Let us try to now see this model. I hope थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है how things are interlinked. Now we will see this in the model. So this is the Ayres Kneese material balance model. इसको Ayres Kneese material balance model बोला जाता है. It depicts the interlinkage between environment and economy. तो अभी तक till now जब भी हम circular flow पढ़ते थे, whenever we used to study this circular flow of income, we used to study this thing that there is a producer, there is a consumer, consumer is providing its labor, producer is providing wages, consumer is buying goods and services, and consumer is paying price for goods and service, है ना? This is what we used to study. अभी तक हम ये इकोनॉमी के अंदर पढ़ रहे थे, है ना? We used to study this circular flow of income. But now what we have done is we have meant
दिस E1, E2, E3, हमने ये सारे कंपोनेंट्स ऐड कर दिए हैं E1, E2, E3 के। एंड व्हाट दीज कंपोनेंट्स आर डूइंग बेटा, ये इन्वायरमेंट को इस इकोनॉमी से लिंक कर रहे हैं। इट इज लिंकिंग इन्वायरमेंट टू इकोनॉमी। तो ये बता रहे हैं कि अच्छा ठीक है, यू नो व्हाट, एनर्जी हम लोग प्रोड्यूसर्स को इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर रहा है ना। जो भी रॉ मटेरियल जनरेट हो रहा है वो इन्वायरमेंट में वापस आ रहा है। आई मीन वेस्ट, वट एवर वेस्ट इज गेटिंग जनरेटेड दैट इज गोइंग टू द इन्वायरमेंट। बहुत सारा एमिनिटीज भी इन्वायरमेंट दे रहा है टू प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। सो व्हेन वी लिंक दिस इन्वायरमेंट टू द इकोनॉमी, जब हमने इन्वायरमेंट एंड इकोनॉमी को इंटरलिंक कर दिया, दैट इज बेसिकली बिकमिंग योर model beta, right? So the interlinkage between environment and economy, that is something which is taught by this Ayres Kneese material balance model. Am I clear with this? ठीक है। Economy consists of two sector, consumer and production. Exchange of goods and service take place between them. तो as I told you, अभी तक हम बात कर रहे थे इकोनॉमी की, and economy consisted of these two sectors. Okay. Environmental services are rendered through three interlinked circles which are contained in E4. तो E4 is that environment एक composite good है. E4 just depicts that environment is providing these three kind of service and we call them under E4. ठीक है, try to see बेटा. Production sector extracts energy resource like coal, oil, material resource like iron ore from the environment, which are then transformed into goods and service for consumption and production purpose. तो ये मैंने आपको बहुत बारी बता दिया है कि ये जो भी हमारे प्रोड्यूसर्स हैं, ये क्या कर रहे हैं ना कि इनको जो भी चाहिए, कोल, पेट्रोलियम, ऑयल, ये सब कुछ ही इन्वायरमेंट से लेते हैं और इसको यूज करके ही गुड्स एंड सर्विस बनाते हैं. सो बेसिकली इट इज बीइंग प्रोवाइडेड बाय द इन्वायरमेंट. This very important, this role of the environment is called supplier of resources. What is this called बेटा, क्या बोल देते हैं इसको? This is called as environment as supplier of resources. तो environment क्या कर रहा है, वो आपको resources supply कर रहा है. It is giving you the raw material for the purpose of production. What is that raw material? Coal, petroleum, energy, solar energy, wind energy, ये सारे raw material environment is providing you. Additionally, there is recycling of resource within production and consumption. Waste material are created at each stage, and this role of environment is called sink of receptor for waste product. This is again very important. Sink of receptor for waste product means what beta? हमने जितना भी वेस्ट जनरेट किया ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन, वी आर जनरेटिंग वेस्ट मटेरियल. हमने वेस्ट तो जनरेट किया है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन. वॉट एवर वेस्ट वी आर जनरेटिंग, जो भी हम ये वेस्ट जनरेट कर रहे हैं, वो सारा का सारा वेस्ट वी आर डंपिंग इनटू द एनवायरनमेंट. हमने सारा कूड़ा एनवायरनमेंट में डाल दिया. दिस इज व्हाट वी आर डूइंग. So I always tell all students the ideal example of Ghaziabad, right? वहां पे तो उस पे there are multiple case studies that have been done. इतना case studies हो गया है. It is the the hub, वहां पर जो आपका वो है पूरा, जहां पे the waste is collected, वो पूरा एक mountain बना हुआ है, right? So कितना सारा waste we are dumping into the environment. तो when we give this waste to the environment, we expect कि environment उस waste को process कर लेगा खुद से, उस waste को sink in कर लेगा, right? The environment will take that waste, right? So that role of the environment, when the environment just takes in that waste, that role of the environment, उसको बोल दिया जाता है बेटा sink of receptor for waste products. राइट? सिंक, एक सिंक क्रिएट हुआ है वेयर द एनवायरनमेंट इज जस्ट टेकिंग ऑल द वेस्ट मटेरियल, कंज्यूमर से, प्रोड्यूसर से, गवर्नमेंट से, हर जगह से द एनवायरनमेंट इज टेकिंग दिस वेस्ट एंड इट हैज टू प्रोसेस दिस वेस्ट. नाउ हियर इज द स्टोरी. द एनवायरनमेंट हैज समथिंग व्हिच इज नोन एज assimilative capacity और carrying capacity. Environment की एक capacity होती है कि इतना ही, देखो हम वेस्ट को, मैं इतने ही वेस्ट को अपने अंदर ले पाऊंगा. जैसे फॉर एग्जाम्पल, इसका एक बहुत आइडियल एग्जाम्पल है दिल्ली में जो विंटर्स में होता है. अगर आप एक लेवल तक पॉल्यूशन क्रिएट करोगे
trees will be able to take this, they will be able to process pollution, और आपको अच्छा ऑक्सीजन मिलता जाएगा, you will still get good quality oxygen. But if you continue doing pollution, then environment will not be able to process it and environment will give you back. अगर आप बहुत ज्यादा पॉल्यूशन क्रिएट करोगे तो एनवायरमेंट उस पॉल्यूशन को ले ही नहीं पाएगा और वो आपको रिवर्ट में वापस उस जो भी वो हार्मफुल गैसेस होंगी, द एनवायरमेंट विल रिटर्न यू दोस बैक, एनवायरमेंट आपको वो वापस कर देगा, right? So the environment has something which is known as assimilative capacity or carrying capacity. That is how much waste environment can absorb. कितना waste environment absorb कर सकता है, how much waste the environment can absorb. So if you will give the waste more than the carrying capacity of the environment, अगर आप एनवायरमेंट को उसकी कैरिंग कैपेसिटी से ज्यादा वेस्ट दोगे तो इट विल कॉज पॉल्यूशन, एनवायरमेंट विल गिव यू बैक, एनवायरमेंट उसको रख ही नहीं पाएगा, कैरी ही नहीं कर पाएगा. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट if this is very important, if the assimilative capacity, also called as carrying capacity, अगर ये जो कैरिंग कैपेसिटी है एनवायरमेंट की, वॉट एवर एनवायरमेंट का कैरिंग कैपेसिटी है, इफ द वेस्ट दैट यू आर जनरेटिंग, वेस्ट जनरेटेड इज मोर, अगर आप ज्यादा वेस्ट जनरेट कर रहे हो, इफ यू आर जनरेटिंग मोर वेस्ट देन द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द एनवायरमेंट, तो इससे क्या होगा? सिंपल, देयर विल बी पॉल्यूशन इन द इकोनॉमी. द एनवायरमेंट विल सिंपली गिव यू बैक. एनवायरमेंट बोलेगा इतना नहीं मैं प्रोसेस कर पाऊंगा, सो यू विल हैव टू बियर, राइट? एंड व्हेन दे यू विल गेट इट बैक फ्रॉम द एनवायरमेंट, इसी को वी कैन से दैट दिस इज अ वे ऑफ नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी. जो ये वेस्ट जनरेट किया यही इसका नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी हो जाएगा, दैट इट विल कॉज पॉल्यूशन. इससे पॉल्यूशन हो रही है, दैट वुड बी इट्स नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी. एम आई मेकिंग सेंस? सो दिस इज व्हाट वी हैव रिटन हियर, that if waste generation is greater than carrying capacity of the environment, then it leads to pollution which creates negative externality and smog. तो उससे pollution भी होगा, negative externality भी होगा, smog भी होगा, right? Okay. This smog effect is related to the third service of the environment, providing aesthetic amenity of spiritual and educational value to the society. तो जैसे जैसे there will be smog, as there will be pollution in the economy, बेटा जैसे जैसे ये pollution होगा वैसे वैसे क्या होना शुरू हो जाएगा? The aestheticness of the environment will go. जितना ज्यादा pollution होगा उतना कम आपको nature दिखेगी, उतने कम आपको क्लियर स्काई दिखेगी, उतना कम आपको अच्छा इन्वायरमेंट दिखेगा, और इन्वायरमेंट की जो एस्थेटिक वैल्यू है उतनी ही कम होती जाएगी. Am I making sense? So when the waste generation will be more than the carrying capacity of the environment, अगर waste generation ज्यादा है, carrying capacity environment की comparatively कम है, so when waste generation is more than carrying capacity, it will impact, this is called as smog effect, it will go ahead and it will impact the third feature of the environment, the third function of the environment called as aesthetic function. ठीक है? Okay. So this is the entire model. I hope that this model is absolutely clear to all of you. ठीक है? इसी मॉडल को हम आयरेस Kneese मॉडल बोलते हैं. Now let me go ahead and let me talk about thermodynamics first, बेटा. फिर हम इस पे आएंगे ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स पे. Now let me just go ahead and talk about law of thermodynamics. Thermodynamics in science, I am not a science student, I have been a commerce student, तो शायद मुझसे better thermodynamics you will be able to explain, anyone from a science background, but I will try to explain in my capacity कि इन इकोनॉमिक्स में इसका क्या implication है, but of course साइंस में इसका क्या implication है, you may be able to go ahead and explain better, whoever is a science student. ठीक है जी? तो बेटा thermodynamics is anything that is related to heat generation in your science.
जिसमें भी हीट एनर्जी जनरेशन का प्रोसेस रहता है, एनीथिंग वेयर हीट और एनर्जी इज जनरेटेड, दैट इज कॉल्ड एज थर्मोडायनामिक्स. इट स्टडीज द रिलेशनशिप बिटवीन हीट एंड एनर्जी, कि जब भी आप कुछ भी प्रोड्यूस करते हो, व्हेनेवर यू प्रोड्यूस एनीथिंग, in that process heat is generated. A very simple example which we used to study as children, कि जब हम खाना भी खाते हैं और हम एनर्जी मिलती है, तो ड्यूरिंग दैट प्रोसेस आवर बॉडी जनरेट्स हीट, राइट? तो द रिलेशनशिप बिटवीन हीट एंड एनर्जी, जब हम इस रिलेशनशिप को पढ़ने की कोशिश करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. Now, basically, there are two laws of thermodynamics. This is the first law of thermodynamics in the environmental sense, which is called as law of conservation of energy or material balance principle, right? इसको हम बोल देते हैं law of conservation of energy. तो what this says is, बहुत simple line में बोलता है कि energy is neither created nor destroyed. It can only be converted from one form to another. ना ही हम एनर्जी को क्रिएट कर सकते हैं, हम बना सकते हैं, ना ही हम एनर्जी को खत्म कर सकते हैं. एनर्जी सिर्फ एक से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है, राइट? ट्राई टू अंडरस्टैंड. एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड, वी कैन नॉट क्रिएट एनर्जी. इट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, हम एनर्जी को ना खत्म कर सकते हैं ना शुरू कर सकते हैं. वी कैन नॉट क्रिएट एनर्जी, वी कैन नॉट डिस्ट्रॉय एनर्जी. इट कैन ओनली बी कन्वर्टेड, हम सिर्फ उसको कन्वर्ट कर सकते हैं from one form to another. एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे में we can go ahead and we can just convert energy. An example of this is this. So this is the solar energy, right? I have the sun here. The sun is giving rays, and ये जो rays दे रहा है, this is a form of energy, right? When this happens, then this will go to your plants. The plants will use the process of photosynthesis, right? And using the process of photosynthesis, the plants will get energy. वो oxygen release करेंगे. The plants will grow. Sunlight में ही grow करते हैं. Now, once the plant grows, it is eaten by an animal, right? This animal gets energy. Any herbivorous animal, जो भी सिर्फ plants को खाता है, उसको उससे energy मिलेगी, right? When this will go ahead and when this will happen, then from here the next animal, जो एक carnivorous animal होगा, जो animals को खाता होगा, they will go ahead and they will eat this animal and get energy, right? So this process where you are, आपने energy नहीं create की, energy is from the environment. The plant is getting energy from sun, कहीं create नहीं हुई है. It was there in the environment. Sun हमेशा से था environment में. You took that, plant took that, वो लेकर plant transferred it to one animal. From one animal it got transferred to another animal, another to another, and so on and so forth. So energy is not created और ना ही destroy हुई. It just got transferred from one person to another. वो सिर्फ ट्रांसफर हो गई. So what happens is the law of thermodynamics. बेटा इसका हम economics में भी implication, we will try to see this. But as of now, the first law states that energy is neither created nor destroyed. It can be converted from one state to another. ठीक है? Now, the implication of the first law in the form of economics. अगर हम इसका economics में पढ़ें, let us try to see this implication. As more resources are extracted for the production process, more waste is generated. अब ध्यान से समझने की कोशिश करना. हमने कुछ प्रोड्यूस किया. जब हम प्रोड्यूस ज्यादा करेंगे, when we will produce more, that means we will be using more energy. That means we will be generating more waste. जब हम वेस्ट ज्यादा जनरेट करेंगे, when we will generate more waste, तो ऐसा हो सकता है that the waste generated, it may happen that the waste generated is more than the carrying capacity of the environment, and this can cause pollution or smog effect. This can cause pollution or smog effect.
So when there will be pollution, when there will be smog effect, when the carrying capacity of the environment will be affected, then in the long run it will impact the economic growth of that economy. समझ रहे हो बात को? Are you understanding this thing? So this is what it is written. Economic growth which results in increased extraction of material. अगर मुझे ग्रो करना है तो मैंने ज्यादा इन्वायरमेंट से लिया, जब मैंने ज्यादा लिया मैंने ज्यादा एनर्जी जनरेट की, बट जब मैंने ज्यादा एनर्जी जनरेट की तो मैंने ज्यादा वेस्ट भी जनरेट किया. व्हेन आई जनरेट मोर एनर्जी आई आल्सो एंड अप जनरेटिंग मोर वेस्ट, right? I end up generating more waste. But there are limit on degree of which resources can be substituted. Degree of substitution that can be derived from environment is very important parameter referred to in literature on economics as the limits to growth. ये बहुत important है, very very important. अब ये बोलता है कि देखो ऐसा नहीं है कि two things can be 100% substitutable from each other. ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस. सपोज देयर इज एन इकोनॉमी विच हैड टू ग्रो, उसको इकोनॉमिक ग्रोथ करनी थी. फॉर इंक्रीज्ड इकोनॉमिक ग्रोथ वी स्टार्टेड यूजिंग वेरी हाई अमाउंट ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस. इनको रिन्यू करने में, इनको दोबारा आने में इकोनॉमी में टाइम लगेगा. So when we extract more of non-renewable resources, then we are depleting them for the future. ये future के लिए नहीं बच रहे हैं. But जो इनसे एनर्जी जनरेट हो रही है शायद वो किसी और रिसोर्स से ना हो. So resources are not 100% substitutable. So when we go ahead and we overuse them today, जब हमने इनको आज ओवर यूटिलाइज कर लिया, हमने इनको बहुत ज्यादा आज यूज कर लिया, तो फॉर फ्यूचर इनकी जो अवेलेबिलिटी हो जाएगी वो लिमिटेड हो जाएगी. हाँ, एंड दिस विल इम्पैक्ट आवर फ्यूचर ग्रोथ. इससे हमारी फ्यूचर की जो ग्रोथ है दैट विल बी इम्पैक्टेड, राइट? एंड दिस, ये जो हमारा प्रोसेस है इन विच आई हैव लेस रिसोर्स अवेलेबल फॉर द फ्यूचर, दिस इज कॉल्ड एज लिमिट टू ग्रोथ. Right? So these are some of the implications of the first law. Now I will come on to the second law. The second law is called as the law of entropy. Now first of all I need to explain this word to you. Beta isko ek baar thoda samajhte hain. What is entropy? Entropy basically is the degree of disorder. Higher entropy means more disorder. Higher entropy means more disorder. जैसे for example, ये एक रूम है और ये दूसरा रूम है. In this room, here is a sofa. इसी के ऊपर क्लोथ्स पड़े हैं. There is a TV, हाँ, and इसके साइड में रिमोट गिरा हुआ है ना? But this is room 1. Here is a sofa. This is a cupboard. All clothes are stacked in the cupboard. Here is the TV. And here is a table पे properly remote पड़ा है. That means this is having everything balanced, सब कुछ discipline में. So here the disorder is low beta and order high है but disorder कम है. Are you understanding? Disorder is low, so it is having low entropy. इधर disorder ज्यादा है. Here things are very disordered, highly disordered. This is high entropy. Are you understanding this? So when we go ahead and we talk about entropy, entropy actually goes ahead and refers to the order of disorder. कितना ज्यादा disorder है, कितना degree disorder का है, that is called as entropy. Entropy here implies energy once generated for consumption is unavailable for work. Cleaning an untidy room implies transformation from state of high entropy to a state of low entropy. अब थोड़ा सा हम इसमें समझने की कोशिश करते हैं. What this law says, first of all, let me explain that, then I will come back to its implication. But it may seem कि मैम ये सब क्या है, ये क्यों पढ़ना है? We must be aware about all aspects that can come in exam. समझो बात. Also, it is very interesting once you deep dive. Right? But you don't have to deep dive. बहुत ज्यादा deep में हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है. We will just study whatever is required for exam. But law of thermodynamics and this model
Ayres के Kneese model can come in exam, तो हमें इसको पढ़ना पड़ेगा. ओके, तो अब ध्यान से देखो. I will take the same example, but मैं इसको थोड़ा सा बताऊंगी कि सेकेंड law of thermodynamics क्या बोलते हैं. So first we will go ahead and we will read the statement. Try to read this better. The second law states that there is loss of energy at each step of energy flow. This law also stands true in ecology as there is progressive decrease in energy at each tropic level. अब समझने की कोशिश करते हैं what it is saying. Try to see this diagram बेटा. देखो, here what is happening, sun is providing sunlight, sun ने sunlight दिया और ये sunlight plant ने process किया. But in the process what happened कि plant सारा sunlight नहीं process कर पाता. It is only able to process some percentage of the sunlight. और बाकी जो एनर्जी जनरेट हो रही है इट गेट्स लॉस्ट इन द वे. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हमने यहाँ एग्जांपल लिया है दैट दिस इज 1000 जूल्स ऑफ लाइट एनर्जी. द प्लांट इज ओनली टेकिंग 10 जूल्स एंड 990 इज लॉस्ट टू द एनवायरमेंट. 990 वापस एनवायरमेंट में छूट गया. प्लांट सिर्फ उसका 10 जूल्स ही ले पाए. द प्लांट इज एबल टू प्रोसेस ओनली वेरी 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 लेस पार्ट ऑफ द इंटायर सनलाइट. Now, once the plant has processed this photosynthesis का process हुआ, it is creating food for itself, उसने plant ने oxygen generate किया, everything happens. Then, after this, when the next animal will take the energy from the plant, वो 10 joules में से it will be only able to process 1 joule of the energy and बाकी 9 will be lost into the environment. So at each step, only some energy gets transferred. कुछ energy तो transfer हो रही है, energy transferred. And the remaining energy is lost to the environment. And the remaining energy is lost to the environment. समझ रहे हो बात को? So now how is this important from the point of view of economics? Economics में इसका क्या use है? We are talking about a system where we have consumers and producer. Consumer and producer are involved in the process of consumption. वो raw material से final goods का consumption and production में involved है. But we are saying कि suppose हमने कुछ amount of raw material लिया process करने के लिए, तो when we will be processing that raw material into goods and service, जब हमने इसको goods and service में process किया, ये raw material का high entropy है. ये raw material highly disordered है, बहुत अलग अलग जगह पे फैला हुआ है, it is spread throughout. We are collecting the raw material, हमने उस raw material को collect किया, हमने उस raw material को process किया, we processed the raw material, we converted into goods and service, जिसको हमने low entropy बनाया. But from converting from high entropy to low entropy, इस पूरे process में a lot of energy gets lost. A lot of, मतलब जितना हम raw material लेंगे उसमें बहुत ज्यादा wastage create हो जाएगी before the final good can be created. So a lot of residual would be processed. A lot of waste will be processed in this process. ये नहीं है कि जितना raw material we will be collecting पूरा का पूरा final good में convert हो गया. No. In that process, a lot of raw material जो हमने लिया था, it will be wasted, residual will be generated, जो residual we will be throwing back to the environment. जैसे इस example में, this wasted energy goes back into the environment, a lot of residual will be going back into the environment, बहुत ज़्यादा residual environment में वापस जाएगा. Am I making sense? So read this out. Production and consumption of energy in a closed environment, which are important input to economic growth, lead to use of material which further leads to flow of energy from low entropy resource to high entropy resource. It is because of the residual generated and thrown in the economy. तो इस process में residual generate भी होगा और economy में throw भी होगा. Right? So this
is what we are going ahead and we are suggesting कि waste is generated, residual is generated, some energy is lost during the process of production and consumption. ठीक है, तो these are the two laws of thermodynamics. They are important from the point of view of your exam and you must go ahead and go through them. Okay, beta. Thank you.